Good morning student. Today we will be revising chapter 3's topic is separation of substance. We already revised these four common method of separation: threshing method, winnowing method, hand picking method and sieving method. In threshing method we separate the grains from stalk by beating it on hard surface. किसी भी hard surface पे जब हम उसको beat करते हैं तो grains loose हो जाते हैं और separate हो जाते हैं. Now in winnowing process we separate the chaff from grains by using wind or blowing air. Now in hand picking method, this method is only used when the quantity of mixture and impurities is small. कम quantity में होते तभी हम इस method का use करते हैं. Now in sieving method, this separation method is based on the size of particles. Like जो fine particles होते हैं, they passes through the sieves and the impurities are remain in the sieves. So these are some common methods. Now today we will discuss about the other common method like sedimentation and decantation, filtration, evaporation and condensation method. So let's start with sedimentation and decantation process. In sedimentation and decantation process, the process of separating insoluble solids suspended in a liquid by allowing them settle down is called sedimentation, and the process of pouring out the clear upper liquid without disturbing the sediments is called decantation. इसको इन दोनों प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, वी पुट सम सैंड इनटू द वाटर. अगर हम थोड़ी सी सैंड जो है वो वाटर के अंदर डालते हैं, देन वी स्टीयर इट एंड देन लीव इट दिस मिक्सचर undisturbed for some times. What happened after some times? These sands are, because sand particles being heavier, so they settle down in the bottom of this container and the clear liquid is settled down above this particles. So these sand particles are called sediments. They are called sediment and the clear liquid is called supernatant. Okay, so this process is called sedimentation process. This process is called sedimentation process, in which sediments are settled down in the bottom of container. Okay, now what we pour out this clear liquid into another container. इस clear liquid को हम दूसरे कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है, this process is called decantation process. Okay, so separating a mixture of sand and water using sedimentation and decantation process. इस प्रोसेस के थ्रू हम सैंड और वाटर को अलग कर सकते हैं और कई अलग जो इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि इनसॉल्युबल होती है लिक्विड के अंदर, उनको इस मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. दिस इज द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर सेपरेट फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टरिंग डिवाइस. ओके, लाइक अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिल्टरिंग डिवाइस हम घर पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ टी वी सेपरेट द टी लीव्स यूजिंग स्ट्रेनर्स. और हम जब लेमन जूस बनाते हैं तो उसके पल्प्स और सीड्स को हम स्ट्रेनर्स के थ्रू सेपरेट करते हैं. तो फिल्ट्रेशन वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फिल्टरिंग डिवाइस. ऐसे ही वाटर में भी कई इम्प्योरिटीज़ होती है जिनको फिल्ट्रेशन के थ्रू जो होता है सेपरेट किया जाता है. फिल्टर पेपर जो होता है इज एक्ट एज अ फिल्टरिंग डिवाइस. नाउ एवोपरेशन प्रोसेस. चिल्ड्रन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन ऐसे प्रोसेस है जो कि आप ऑलरेडी यू आर स्टार्टेड इन योर प्रीवियस क्लास. आप पहले भी इसको पढ़ते आ रहे हैं. ओके, इन इवापोरेशन प्रोसेस द process in which liquid change into gas. This is the process in which liquid change into gaseous state. For example, जो इस प्रोसेस का यूज़ कर हम सी सॉल्ट जो होता है, वी ऑब्टेन सी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. हाउ? सी To obtain salt, sea water is collected in shallow pit and allowed to stand. Shallow pits बनाए जाते हैं सी वाटर के और उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है. Now sun heats evaporate the water. Salt which is left behind is collected. What happen? Sun's heat evaporate the water. वाटर जो होता है वो evaporate हो जाता है and in the form of water vapor. And what is left behind? Sea salt. After purification, salt is ready for consumption.
इस सी सॉल्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है और आफ्टर कंजप्शन इसको हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इज द ओल्डेस्ट वे टू ऑब्टेन सी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सो एवोपरेशन मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन सी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. नाउ नेक्स्ट इज condensation process. In condensation, this process is opposite of evaporation process. What? In this process, gas is changed into liquid state. Evaporation process, liquid is changed into gaseous state on heating. केवल हीटिंग करने पर ही, हीट करने पर ही वो जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, वाटर जो होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. बट इन कंडेंसेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन. इन दिस प्रोसेस गैस स्टेट इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग. ओके, नाउ the process in which a gas changes into liquid is called condensation. Okay, it takes place only when water vapor hits a cold surface. जब जो वो steam और water vapor होती है वो किसी cold surface को hit करती है तभी ये process होता है. ओके, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल मेरे पास है, आपके पास. फॉर एग्जाम्पल वी टेक द सॉल्ट वाटर इन द केटल. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को वाटर से सेपरेट कर रहे हैं. सो वी टेक द सॉल्ट वाटर इन द केटल एंड हीट इट ओवर द बर्नर. ओके, एंड we hold a metal plate above the spout. Okay, now what happen when water is heated? जब water heated होता है, it convert into water vapors and comes out through this spout of this spout and heat the surface of this metal plate. जैसे ही वो गर्म होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, स्पाउट से बाहर आता है और इसकी मेटल प्लेट की सरफेस को टच करता है. आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्टीम्स कम आउट ऑफ द स्पाउट एंड हिट द सरफेस ऑफ दिस मेटल प्लेट. नाउ व्हाट हैपन after when the steam hit this plate, it convert into liquid state. Okay, so what happened, gas convert into liquid state, steam convert into water droplets. Okay, जो कि एक अलग कंटेनर में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं. So what is left behind? Salt is left behind in the kettle. So ये एक तरह से मेथड है जिसमें हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. किसके थ्रू? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू. सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच gaseous state convert into liquid stage. So these are all common method to separating a substance from a mixture. Okay students, read the chapter and learn the terms.